So a quick video I'm making you for all of you guys. So I have extra 5 minutes today. So why not just explain the mechanisms behind something, what I say, and what I mean by it. And some of you ask like, sir, can I go for that PR? Like I'm feeling really good. Then I tell that no, you should not. Just let's build it. So what do we mean by that? Let's build a PR. And what do we mean by कि पीआर अभी हिट मत करो थोड़ी दिन बाद हिट करो और मैं अभी मैंने ये one of my athlete I'm having a discussion with him कि although his bar were moving really fast but I told him that don't go for it, don't go for that PR because it is going to hurt us in the long run. So why I say a few things and what I mean by that. So number one thing, this whole thing, it is more nuanced than what I am about to explain, how I'm about to explain, because these things are not that linear. But I will try to give you the general idea behind. Okay, the general idea behind, and I think if more people knew about it, if more people were aware about it, then there will be less stupid mistakes in the gym. Okay, so I use the term stupid because these things are like I won't say these are you can just Google it or you can find it out, but if you know about a few words like fatigue, training, detraining, overreaching, overcompensation, if you know these terms, like if you spend like 5 years into your powerlifting game or any kind of strength sport or any kind of athletic endeavor, you are going to know about these things. Okay, so I got to know about these things only in this way. So and few uh, a few of Google searches and you will there is a higher chance that you may end up in the right article and you may end up soaking all this knowledge. So so I am making this thing simple. So think about when you start training. uh, uh, so think about when you start training, like when you start a block, and always think about in terms of like how much time you are spending in a block and how much net stimulus. So how this stimulus and fatigue thing works. Okay, uh, so there's one thing. Let's say this is a graph. Here I am about to explain the time. That means this is where I make week one, then this is week two, then this is week three, and this is week four. Okay, so and these are the intensity I'm measuring by the percentage of your one rep max. So this is not only dependent on the absolute percentage, but it somehow depends on the day-to-day RPE level, day-to-day exertion level as well. So this is why for some new people, I give them numbers, but when one gets more wiser, more experience with the work they are putting in, so I make them understand that go with RPE. And what I learned about this whole endeavor is whoever uses this both, they also follow the numbers and they also follow the RPE, they get the most amount of the results. And especially the people who are on the lower stress life side, like the students, younger adults, they will get more results out of a percentage based program. But with the adults with more responsibility, more work stress, they work really well with RPE. And the competitive athletes, they are on the all maybe they have little bit of lesser stress outside the gym, but their inside gym stress is more because they have to compete. So for them also, taking the RPE approach in the first few weeks, in the RPE approach in the long term, they are going to get a massive amount of athletic advantage over their competitors. So let me begin. How we measure it? Okay. So whenever we progress through the weeks, this is the intensity. Sorry, uh, I actually this is about the intensity, right? So we can take this as a proxy for these two things. One is in here we are going to measure fatigue and we are going to measure uh, training stimulus. Okay,
stimulus. So you get to know this. Stimulus is something we need out of training. That means we want to progress in certain way. So the amount of doses, like we need a medicine, right? If we take a medicine, we need certain amount of work it has to do for us, right? So we take a certain doses of that. The dose is dependent on the intensity level. So we can take the dose and the amount of the medicine as a proxy of that stimulus. And also you can see that there will be certain level of side effects of that medicine. Okay, fatigue is the side effect of the doses of medicine we are taking, that is our training stimulus. And the benefits, it is the stimulus. Okay, so when we train more, when you train harder, our training stimulus is going up because we are doing a specific enough job so that we can derive a certain level of outcome out of it. So it will be called a training stimulus. So the when we train more and more throughout the weeks, we ramp up our singles, we ramp up our set of five, we ramp up our set of six, then our stimulus is going to get up. So our stimulus was here, then the stimulus is going to get up. Let's say this is the graph of the stimulus. Let's say we ramp it up linearly. And fatigue is something, it doesn't it doesn't start like it is always there. There will be non-zero fatigue, it will always be there. It will be like this and this, and all of a sudden it goes really up. Okay, it goes really up. So most of the people, most of the people, these will be our net stimulus. This is our net stimulus. That means the training stimulus we are getting, the profit, sorry, the revenue is the stimulus, and the cost we are incurring is the fatigue. The profit will be our this area of the graph. That means as a smart trainee, we want to maximize these red area. Okay, we want to maximize this red area because this is our net stimulus. And this is where you will find, you will find that we want to end the block. This is why our block mostly consists of, for some it will be 4 weeks, for some it will be 8 weeks, or for some it may be 12 weeks. So we want to have the most amount of net stimulus from a block. So this is where you can see, when you can see always the block is ended with your strength is up. With your strength is up, you are moving more weight. Yes, we are moving more weight here. But after that what happens, after that what happens, although we can push our body beyond that, but the fatigue cost will be quite more. Like we are now in the net loss zone, this will be our net loss zone. So if we keep on pushing, we will get like hurt, and we will actually getting less out of it, because this is going to negative. We are going in incurring losses, and we are actually not minimizing the amount of uh, not the amount of less sorry for the distractions, there are some text popping up. So we are actually not maximizing our profit. So this is where we end up the block. Okay, so some of you, what happens, that you are kind of around week 2 or week 3, your fatigue is quite low, you are feeling good, and you see that you are creeping up, you are in a you are on a upward spiral of the load progression. तब मन में वो दरिंदा जाग जाता है, सर आज मैंने एक पीआर आज पीआर अटेम्प्ट कर लूं क्या, सर आज मैंने थोड़ा सा हैवी लगा लिया आपने जो दिया था। तो इस वे में इस तरीके में हम जा रहे थे। तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा कर लेगा कि हाँ मुझे और ज्यादा लोड प्रोग्रेशन लेना है, तो उसका पाथ हो जाएगा ऐसा, वो ज्यादा लोड प्रोग्रेशन ले लिया, लेकिन उस वो इतना डिट्रेन स्टेट पे था कि उसका फटीग भी ज्यादा हो गया और उसका ब्लॉक इधर ही खत्म हो गया। तो देखो इनको नेट स्टिमुलस कितना मिला, ये रेड एरिया मिला। अगर वो मेरे बात सुनते, अगर वो मेरे बात की मतलब गौर करते, मेरे मेरे को थोड़ा सा कि कोच को थोड़ी ज्यादा बात पता होंगे, तो उसको ये नेट स्टिमुलस ये ज्यादा मिलना था, तो उसका पीआर ज्यादा हिट होना था। ठीक है, ज्यादा पीआर हिट होना था, तो वो बन जाता है थोड़ा सा
उसका कट जाता है, वो सी वर्ड कट जाता है उसका, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ अभी, उसका सी कट जाता है। तो अगर उसको मैं डांट दूं तो वो थोड़ा सा बुरा भी मान जाता है कि हाँ सर, मैं तो पीआर हिट कर लिया, आप मुझे डांट क्यों रहे हो। तो इसीलिए मैं डांटता हूँ, क्योंकि आपने मतलब स्विफ्ट डिजायर लेने के चक्कर में फॉर्च्यूनर गवा दिया, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे कि लो स्ट्रेस वीक के दौरान, लो स्ट्रेस वीक के दौरान या फिर किसी हम लो स्ट्रेस वीक के दौरान क्यों हम ज्यादा वेट हिट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, आप इस पार्ट पे गौर कीजिए, इस पार्ट पे गौर कीजिए, इसका मैं अलग ग्राफ अभी बनाऊंगा। तो अभी इस बंदे को मुझे क्या करना है, इसका जो रेड वाला ग्राफ है इसको मुझे नीचे लाना है, ठीक है, इसको मुझे नीचे लाना है। और ये थोड़ा सा अभी, क्योंकि इसका स्टिमुलस इतना गेन कर लिया, ये थोड़ा सा मतलब आ, ये थोड़ा सा क्या हो गया है, ये थोड़ा सा मतलब रिकवर कर गया इससे, ठीक है। ये थोड़ा सा रिकवर कर गया है क्योंकि मैं अभी इसको ट्रेनिंग वॉल्यूम कम कर दिया, इंटेंसिटी की, लेकिन इंटेंसिटी वो रैंप अप कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग वॉल्यूम कम करूंगा, आप कम ट्रेनिंग करोगे तो आपका ट्रेनिंग भी, नेट ट्रेनिंग भी डिक्लाइन होगा ऐसे, नेट ट्रेनिंग भी आप डिक्लाइन होगा ऐसे, ठीक है। आपका नेट ट्रेनिंग स्टिमुलस भी डिक्लाइन होगा ऐसे, लेकिन वी आर स्टिल इन ए पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि ऑल्दो आवर नेट ट्रेनिंग इज गोइंग डाउन, हमारा रेवेन्यू जितना डाउन जा रहा है, लेकिन कॉस्ट अभी बहुत स्पीड से कम हो रहा है। जब वो भी हो, वो भी एक प्रॉफिट का ही सिचुएशन है। तो अभी क्या करना है, अभी ये थोड़ा सा एक और, क्योंकि वो रिकवर कर रहा है तो ये यहाँ पे एक दो पीआर निकाल सकता है, लेकिन उस पे भी उसका आ जाता है कि मन में ग्रीड, ग्रीड आ जाता है ना, काम क्रोध मोह माया, है ना, काम क्रोध मोह माया ये आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि बंदा, हाँ, काम आ जाता है कि हाँ मैं अगर पीआर हिट कर लूंगा तो जिम क्रश हो जाएंगे, इम्प्रेस सोशल मीडिया पे आ जाएगा, फॉलोइंग क्रोध हो जाता है कि हाँ मैं अपना हेटर्स को थोड़ा सा वो दिखा सकता हूँ, अपना हेटर्स को मतलब उसकी औकात दिखा सकता हूँ। मोह भी आ जाता है कि कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप भी दे देगा अगर मैं एक अच्छा एडिट डाल दूँ विथ पीआर से, एक अच्छा गाना लगा के। माया भी आ जाता है, वो इल्यूजन हो जाता है, हाँ अगर मैं ये कर लूंगा तो मतलब मेरा नेक्स्ट तो टक्कर टेलर है तुझसे ही है, नेक्स्ट तो मेरा मतलब मैं तो पावर लिफ्टिंग का विराट कोहली बन चुका हूँ, अभी अभी तो मुझे नेक्स्ट अनुष्का ही मिलने वाला है, तो वो इल्यूजन में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको क्यों पीआर नहीं हिट करना चाहिए। देखो, आप जब हाई फटीग सिचुएशन पे हो, आप जब हाई फटीग सिचुएशन पे हो, व्हेन यू आर इन ए सिचुएशन ऑफ हाई फटीग, योर टॉप एंड स्ट्रेंथ, योर टॉप एंड, आपका जो टॉप एंड स्ट्रेंथ होंगे वो थोड़ा सा डाउन जाता है, मतलब फटीग मास्क फिटनेस, आप देखो, आप रेप्स पीआर निकाल सकते हो उस सिचुएशन पे, लेकिन आप उस सिचुएशन पे शायद आपका जो पोटेंशियल है, क्योंकि फटीग स्टिल हाई है, ऑल्दो फटीग इज ड्रॉपिंग, यू कैन सी दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग, उससे नीचे तो फटीग उससे भी नीचे है, उससे भी ऊपर है ना, स्टिल द फटीग इज ड्रॉपिंग। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हमको फटीग को और ड्रॉप करने देना है। अगर इस दौरान अगर आप ज्यादा वेट हिट कर लिए तो फटीग का ग्राफ क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा और फिर से आपको यही निगेटिव जोन में ढकेल देगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से फटीग को थोड़ा सा नीचे लाना है, ट्रेनिंग वॉल्यूम भी नीचे जाएगा, लेकिन अभी हम नेक्स्ट ब्लॉक जब स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको B2W1 लिख के देता हूँ, तब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका नेट स्टिमुलस इधर था, लेकिन आप हमारा अभी नेट स्टिमुलस कहाँ से शुरू होगा, अभी शुरू होगा इधर से, और फटीग इधर से शुरू होगा। तो ये वाला सेम ऊपर जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर की इंटेंसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। किसी किसी इतना ग्रीडी हो जाते हैं आप लोग क्या करते हो कि आप फटीग को यहाँ से यहाँ आने ही नहीं दो, फटीग ऊपर जाते रहता है, ट्रेनिंग स्टिमुलस नीचे आ जाता है। तो फिर आप कंप्लेन करते हो, सर मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, सर मुझे तो यही नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। क्योंकि सर को कुछ बात पता है जो आपको शायद पता नहीं है, इसीलिए आप गाइडेंस सीख कर रहे हो। तो उस बात का आप अगर ध्यान में रखोगे तो आप लोग का प्रोग्रेशन लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा। आई होप आई मेड सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।